नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। खुश रहो बेटियाँ। आई एवियन अमित कुमार शर्मा। टुडे we are going to discussions the topic of formulation of objective. The topic of this subject pedagogy of English. Formulation of objective. The objective should be as clearly and crisply stated as possible. Usually only one or at the most two objectives should be tackled in one study. If there are more than two objectives, then it may be appropriate to address the additional objective through a separate study. This is the means of formulation of objective. Repeat again. The objective should be as clearly and crisply stated possibly. Usually one or at the two most objective should be tackled in one study. If there are more than two objectives, then it may be appropriate to address the additional objective through a separate study. What is formulation of objectives in curriculum? Listen be carefully. The formulation of the curriculum objective make provision of assistance to the teachers to take decisions about the sequence in which the material is to be presented to the students. In different subject there are certain lesson plans that need to be learned before the, यानी कि आपने जो भी पहले से लिसन किया हो। एंड एक क्वालिटी जो बताना चाहूँगा, लर्निंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं लाइक एज ए फॉर्मुलेटिव बिहेवियर है, क्वालिटी रिक्वायर्ड है, फॉर्मुलेशन रिसर्च है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं। ये कोई भी क्वेश्चन आपसे इस में पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाउ डू यू फॉर्मुलेट ए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, देन तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं कि बिगिन ईच बिहेवियर ऑब्जेक्टिव विद ए वर्ब, द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनी बिहेवियर, द ऑब्जेक्टिव इज द वर्ब सेलेक्टेड टू इंडिकेट एक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़। देन सेकेंड थॉट अगर अपन लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं स्टेट ईच ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस। देन थर्ड अगर अपन स्टेज इसकी लेना चाहें तो थर्ड भी ले लें, स्टेट ईच ऑब्जेक्टिव सो दैट इट इंक्लूड्स ओनली वन जनरल लर्निंग outcomes. This is the behavior objective formulations. And what should be included when formulating goals and objective? curriculum में ये भी बहुत मस्ट है। Okay, तो recognize the influence of national, state and local goals on what is taught in classrooms. Discuss the function of goals regarding annual, unit and lesson planning. Then prepare original behavior objectives, prepare original goals objectives, describe the current emphasis on the use of objective in classrooms. That's it. This is the topic of formulation of objective. And the next topic is choosing appropriate materials. choosing appropriate materials. Thank you all of you. Next session में मैं आपको बताऊंगा choosing appropriate materials. Is it clear? Thank you.